राधे 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 सभी को राधे राधे। सभी को राधे। प्रीति बहन वेलकम है लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बिमला बहन राधे राधे, वेलकम है लाइव में आपका। राधे 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 राधे। सभी लोग लाइव को लाइक कर लीजिए और ऐड को फुल वॉच करिएगा। आप लोग ऐड को स्किप करके आप लोग कमेंट मत करिएगा प्लीज़। बिमला बहन लाइव को लाइक कर लीजिए। आपका एक ही लाइक है, आपका लाइक नहीं मिला है अभी तक।
राधे राधे। ऐड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कितने भी जाओगे पाठ करने के लिए। राधे राधे सभी दोस्तों को, राधे राधे। खुशबू जी वेलकम है लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज सिस्टर वेलकम है लाइव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ऐड को फुल वॉच करते रहिए, हम आप लोगों का कमेंट देख रहे हैं। सभी लोग लाइव को लाइक कर लीजिए। ये हो गया 5 नंबर पे, फिर तुमको जाना है। अभी कैमरा बंद किए हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अभी ओपन करते हैं। आप लोग ऐड को फुल वॉच करते रहिए। पिपलेसर की हवन करा करके थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बस 1 मिनट रुकिए, कैमरा ओपन कर रहे हैं। सुनील भाई वेलकम है लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आ रही हूँ, आ रही हूँ। दिवाली के पास एक सेकंड रुको। खुशबू बिटिया रानी, एक सेकंड। बहुत देर नहीं लगी, आ रही हूँ बस। एक सेकंड रुको। कहीं नहीं गए थे, काम कर रहे थे बिटिया रानी। काम काम काम, नवरात्रि चल रही, बहुत काम है इस समय।
हाँ, हमारे घर में बहुत लोग हैं, पता नहीं है क्या। तुम्हारे फूफा जी हैं और हमारा बेटा है, तो सब बोलते हैं, सबके मुंह है ना, इसलिए आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। बाकी कहाँ आई होगी, हमने बंद कर दिया था आवाज। अब थोड़ी बहुत तो घर में लोग हैं तो आएगी तो है ही। हम कहाँ करत रही। हाँ रीसू, हवन कहाँ कर रही थी? फूफा पूछ रहे हैं तुम्हारे। अरे भाई बैठा रहे हैं। रीसू कह रही है जल्दी आओ बुआ, नहीं हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। इनको पता है ऐड, थैंक यू, ऐड को सब लोग फुल वॉच करिए। चलने लगा दो निकलते हैं, जो दिन होता है उसमें से कम से डाल देते हैं। बाय बाय बिटिया रानी, बाय 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 बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आ गई यही बहुत है। जितना समय हो उतना आप लोग दीजिए, बहुत है। पहले हमने कहा एसी बंद करे, ससुरी चढ़ा रहा है। ओके, ऑन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ईमानदारी से ऑन रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐड को खाली फुल वॉच करते रहिए और अपना अपना ऐड पे ध्यान दीजिएगा कि ऐड को आप जब ऐड आए तो ऐड लिख दीजिएगा, बस हमें पता चले कि आप लोगों के मोबाइल में कितना ऐड आया। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मस्त रहिए, अपना अपना काम करते रहिए, काम छोड़ करके कोई भी कमेंट ना करे। ऐड खत्म हो गया दीदी, ओके, थैंक यू बहना, ऐड को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे 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 राधे। कितना बस वाचिंग को सब लोग डाउन मत होने दीजिएगा। अगर वाचिंग डाउन होगी तो दिक्कत होगी। अपना अपना वाचिंग चेक करते रहिएगा, बस बीच बीच में नहीं पता लगता है कि एकदम से गायब हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि है भी कोई कि नहीं है। अभी बताओ कितने लोग हमारे लाइव में हैं? एक की वाचिंग दिख रही है। अष्टमी कब है दीदी?
अष्टमी तो उदया तिथि वाली परसों मानी है, और अष्टमी लग जाएगी कल है, लेकिन अपने लोगों के यहाँ उदया तिथि की ली जाती है, इसलिए अपने लोगों को परसों रहना है। आज कितनी तारीख है? आज 24 है, कल 25 है। 26 तारीख को अष्टमी अपने लोगों के यहाँ है। अपने क्या, सबके यहाँ उदया तिथि की अष्टमी ली जाती है, परसों सबके यहाँ अष्टमी होगी। हाँ तो बता तो रहे कल लग जाएगी, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो लग जाती है, लेट से लगती है, तो वो हम लोगों के यहाँ नहीं रही जाती है। हम लोगों के यहाँ सारे व्रत उदया तिथि को लेकर रहा जाता है, जो सूर्य उदय से शुरू हो वही व्रत का मान्य होता है। लग तो कल ही अष्टमी जाएगी, अष्टमी कल है, और अष्टमी कल नौ, अष्टमी में नवमी है परसों। अभी हम तुमको बताएंगे बाद में प्रीति बहन। राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। हरे राम कृष्ण डोरे हिले झूलन झूले रानी रखमना। राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। 3 की वाचिंग है, जिसमें से 2 हमारा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने अपने वाचिंग पर ध्यान दीजिए। आप लोग कमेंट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाचिंग बना के रखिए भाई। हम फिर से आ गए, ओके, बहुत बढ़िया किया आपने, ऐड खत्म हो गया, थैंक यू। वही तो नहीं समझ में आता कभी कभी कि 2 फोन प्रीति बहन का लगा है, चलो उनका तो लगा ही है, ये 2 हमारा लगा है, 4 एक लगा है विमला बहन का, 5 और हमको लगता है 2 लगा, 2 आईडी इनकी भी लगी है। राम समारी बहन आपकी 2 लगी है कि 1 लगी है? एक सुनील भाई की लगी है। 7 8 9 10 आईडी लगी है, जिसमें से वाचिंग 2 की दिख रही है।
अब जा रही हूँ लाइक करने। बहुत अच्छा है। अभी काहे जा रही हो? बाद में जाना। अभी तो 1 घंटे का टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पोस्ट तो एक ही आईडी है तो क्या करूं? कुछ ना करो, आप आपके पास एक बहुत है। लाइक कर दो, नहीं लाइक कर दो, नहीं। हाँ कर दो बहना, कर दो, भूलना नहीं। नहीं, हम चले आएंगे दिल्ली लाइक लेने के लिए। हम अपना लाइक नहीं छोड़ते हैं। अपना लाइक ले जाएंगे आके। हाँ, एक वाचिंग दिख रही है, वही तो मेरे समझ में नहीं आता है। कब आ रही हो बुआ? आ रहे हैं मुंडन में। कार्तिक के मुंडन में आ रहे हैं। देखो एक वाचिंग दिख रही है, वही तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। हम कहते हैं कमेंट बिल्कुल ना हो, वाचिंग बरकरार रहे और बस आराम से अपना व्यस्त रहिए। मुंडन कार्तिक का है। को लगता है अप्रैल में है। मार्च चल ही रहा है, अप्रैल में। हाँ अप्रैल में है। ऐड आ रहा है, ओके। 23 अप्रैल को है, 23 अप्रैल को। ऐड को सभी लोग फुल वॉच करिए। और भाई सभी लोग अपना अपना वाचिंग बना के रखिए। अगर वाचिंग नहीं बन रही है तो आप लोग एक बार आईडी से निकल जाइए, दोबारा आईडी में फिर से एंटर करिए, वाचिंग को बरकरार रखिए। नहीं तो फिर हरी वाली इमोजी भेजो, हंसने वाली जो हरी वाली इमोजी होती है उसको सभी लोग एक साथ भेजो, वाचिंग बरकरार हो जाएगी, क्योंकि सब लोग हैं हमारे लाइव में। हाँ आपने कर लिया, 5 की वाचिंग हो गई, हमने भी कर लिया। क्योंकि वाचिंग अगर नहीं रहती है तो फिर उसका कोई वो नहीं होता फिर। अगर वाचिंग डाउन होती हुई दिखे और सब लोग हो तो उसमें ये मत सोचा करो कि हमको कह रही हैं कि वाचिंग मतलब हम हैं नहीं लाइव में, ऐसा नहीं है। सब लोगों के रहते हुए भी वाचिंग डाउन हो जाती है, तो उसमें हरी वाली इमोजी सब लोग एक साथ भेजा करो तो अपने आप वाचिंग बरकरार हो जाती है। और अगर उससे भी नहीं होती है तो आईडी से एक बार निकल जाइए, फिर से एंटर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि ऐड ही आपको ज़रूरी है। ये देखो हमारी खुशबू बिटिया रानी खूब हंस रही है, सुमन जी भी हंस रही हैं, प्रीति बहन भी हंस रही हैं। सब लोग हंस लीजिए, हंसना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल। पास पास किसी को खाना हो तो बताओ। हमको तो नहीं खाना है क्योंकि हमारा व्रत है, लेकिन दिख गया तो हमने कहा अगर आप लोगों को खाना है तो बताओ फिर। राधे राधे राधे।
सभी देवताओं को मेरा नमस्कार है, सभी देवताओं। और जिसके जिसके आईडी पर ऐड आएगा आप लोग ऐड जरूर लिखिएगा और ऐड को फुल वॉच करिएगा। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से वाचिंग गिर रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कदार क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ तो है नेटवर्क, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय बढ़िया चल रहा है जियो। आ रहे हैं। सरो सिस्टर, राम राम सीताराम। सभी बहनों को राम राम सीताराम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अकेले अकेले नहीं हंस रहे हैं, ये हमारे सुपुत्र हैं ना, ये हंसा रहे हैं हमको। राधे 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 राधे। जय माता दी। प्रीति दी, प्रीति, अच्छा ये दीदी लिखा है। प्रीति बहन, जय माता दी। वेलकम है लाइव में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बनी रही ना लाइव में, कभी मत जाना। वही तो हम कहे। ऐड ऐड चल रहा है दीदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी दीदी जी। सभी बहनों को, सभी भाइयों को धन्यवाद। और सभी लोग ऐड को फुल वॉच करते रहना, बने रहेंगे, बिल्कुल बने रहिए, डटे रहो। डटे रहो, नहीं घर से उठा लाएंगे। डटे रहने के लिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक तो आज हम खुद ही सो गए थे, नहीं 3 बजे लाइव चला देते हैं। 3 बजे चला देते हैं तो 3 2 5, 5 साढ़े 5 बजे तक बंद कर देते हैं। मेरी आईडी से सुपर चैट क्यों नहीं हो रहा है अब पर? सुनो, सारी आईडी से नहीं होगा मेरी बहना। जो आईडी आपकी अकाउंट से लिंक होगी, जिससे आपका गूगल पे चल रहा होगा या मतलब फ़ोन पे चल रहा होगा, उसी से होगी। जिस नंबर पर गूगल पे चल रहा होगा, उसी पर जो आईडी उसी नंबर से बनी होगी, वही से होगा गूगल पे वो सुपर चैट, अन्यथा किसी और आईडी से नहीं होगा।
सुपर चैट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ यही है। अगर वो नंबर उसमें नहीं होगा अकाउंट पर, जैसे आप गूगल पे चला रहे हो तो नहीं होगा, सारी आईडी से नहीं होता है। राधे 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 राधे। सभी को राधे 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 राधे। सोचा आपको सरप्राइज दे दूं लेकिन हुआ ही नहीं। अभी तो हमको पता है कि आप क्या सोच रही थी। हाँ आप बिजी रहो, खूब बिजी रहो, ऑन करके छोड़ दो और आप बिजी रहो, चलने दो, आराम से अपने आप ऐड आता रहेगा, नो टेंशन। बस कूदने वाले इंसानों से दिक्कत होती है, बाकी सबसे प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे लाइव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहीं भी इधर उधर नहीं हिलते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 आईडी है, 3 आईडी है, तो हम अपना खुद ही देख लेते हैं कि कूदने वाला कौन है और ना कूदने वाला कौन है। बाकी सब नहीं है। जो लोग नहीं कूदते हैं वो लोग अगर ऐड के समय सिर्फ ऐड लिख दें, बस टेंशन मुक्त रहें। अपने अपने दिल से सोच लीजिएगा कौन कूदता है। बाकी आप लोग मस्त रहिए, नो टेंशन। हमारे लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कमेंट का कोई इशू ही नहीं है, कमेंट बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग बस ऐड के समय ये मत भूलिए, ऐड ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कितना ऐड आया है एक में, बस। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बहुत कूदती हो, तुम बनी रहो। कहीं चाय बनाने चली जाती हो तो कहीं खाना देने। खाली हमारी प्रीति बहन है, मतलब प्रीति अब 2 हो गई ना, तब प्रीति दुबे हैं जो नहीं कूदती हैं। वो आराम से फ़ोन रख के टेंशन फ्री रहती है, उनकी तरफ से हम भी टेंशन फ्री। और प्रीति शुक्ला की तरफ से हमको बहुत टेंशन रहती है। ये उछलती रहती है पूरे घर में। राम 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 सीता राम, राधे 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 राधे। सरो सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ हैं? हैं लाइव में, लाइव में हैं। ये उछलती रहती हैं तो इससे हमको टेंशन होती है। अरे ये किसी और के लाइव में नहीं उछलती हैं, ये अपने घर में उछलती हैं। क्या करें, तुम चाहती हो कि नहीं नहीं, करो करो करो, हमारे दादी अम्मा की भी सेवा अच्छे से करो। ऐड ऐड को फुल्लो आज करते रहो। सासू माँ की सेवा करें, अपने ससुर जी की करें, सब की करें, खूब करें। सेवा करेंगी तभी तो मेवा मिलेगा, नहीं तो ऐसे मेवा थोड़ी मिलता है किसी को। ऐड आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। बस यही चीज़ है, आप लोग ऐड के समय ऐड लिखिए, बस मस्त रहिए। ऐड आ रहा है तो आप लोग कमेंट ना करिए, ऐड लिख दीजिए, उसके बाद में अपना टेंशन मुक्त रहिए। ऐड को फुल वॉच कर लीजिए, उसके बाद में जब आप फ्री हो तो ऐड के समय फिर ऐड लिख दो, बस। हमारी तरफ से हम बार बार यही कहते हैं, आप लोग कमेंट के लिए परेशान मत हुआ करो। जो चैनल मोनो है उसमें कमेंट की वैल्यू नहीं होती है, उसमें आप लोग सिर्फ ऐड की होती है। ऐड को आप लोग फुल वॉच करिए और ऐड के समय ऐड लिखिए, और ऐड को स्किप करके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
बहुत लोग क्या करते हैं, कमेंट करने के चक्कर में ऐड को स्किप कर देंगे, कमेंट करने लगेंगे, तो कमेंट का कोई मतलब नहीं है। ऐड, थैंक यू प्रीति बहन। जब आपने ऐड को स्किप कर दिया तो फिर लाइव का कोई मतलब नहीं। राधे 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 सभी को, राधे राधे। क्योंकि कभी कभी ऐड आता है तो कमेंट करने के लिए उसमें नहीं ऑप्शन रहता है, तो कमेंट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल जाता है, हम जब लाइव बंद करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है और हम उसमें देख सकते हैं कि कमेंट करने के चक्कर में किसने किसने स्किप किया है और कितना किसने देखा है ऐड को। हाँ, हमेशा होता है, कभी कभी केवल ऑप्शन हट जाता है। जैसे ऐड आता, कभी कभी फुल स्क्रीन पर आता है ऐड, तो उस पर हट जाता है, बाकी एनी टाइम रहता है ऑप्शन सबके के में। तो ज़्यादा डॉलर बनता है ऐड से, उसके बाद व्यूज से। तो ऐड को आप लोग फुल वॉच करिए। व्यूज और ऐड में फ़र्क है। व्यूज जो है जैसे ऐड के बाद का नंबर व्यूज का है, और ये नहीं है कि स्किप कर दिया आपने उधर से तो हमें नहीं पता चलेगा। जब हम लाइव बंद करेंगे तो हमें दिखेगा कितना ऐड स्किप हुआ है, कौन कौन सी आईडी से हुआ है। तो इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ऐड को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कमेंट के लिए नहीं परेशान कर रहे हैं तो ऐड को स्किप करके कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग टेंशन फ्री होकर के मोबाइल रख दीजिए, ऐड अपने आप आता रहेगा, वॉच होता रहेगा। क्योंकि यूट्यूब ने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं कि खुद ही यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख लो। नेट खत्म हो गया दीदी। नेट खत्म हो गया कि ऐड खत्म हो गया? और सुनील भाई, जो आप अपने लाइव में चिल्लाते रहते हो डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, हमारे में 9-10 आईडी लगी है, 2 की वाचिंग दिख रही है, बताइए। अब आप लाइए, हमारे में पूरा करिए वाचिंग। 10 आईडी लगी है और जिसमें से 2 की वाचिंग दिख रही है। कल आपको यही चीज़ हम बता रहे थे आपके लाइव में कि कोई आईडी से निकलता नहीं है, वाचिंग डाउन होती है, नेटवर्क की वजह से भी डाउन हो जाती है। लेकिन आप कल लाइव में परेशान कर दिए थे एकदम। वाचिंग डाउन हो रही है, वाचिंग डाउन हो रही है, सबके में रेड बत्ती भी जल रही है, बराबर कमेंट भी हो रहा है। वो सुनील भाई की वाचिंग गिरी जा रही थी। काम नहीं कर पा रहे थे हम। अभी हमारे में 1 की वाचिंग है, दोनों। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बर्तन धो, ऐड अपने आप आ जाएगा। जब उसका समय होगा तो ऐड आ जाएगा। आप लोग अपना अपना काम करते रहो, काम छोड़ करके मत लगो, कोई टेंशन नहीं है। हम इसीलिए बार बार आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए। बस इतना होना चाहिए कि आप लोग लाइव में हो, इसका जानकारी। जैसे अब ऐड आया, आपने ऐड लिखा तो इसका मतलब आप ऐड देख रहे हो, बस। हमें पता है कि आप लाइव में हो, आपको पता है, बस और क्या चाहिए। आन हूँ, ओके ओके बिमला बहन, आन रहिए, मस्त रहिए। सबको बोल रही हैं, सबको बोल रहे हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर लीजिए, मोबाइल को रख दीजिए, अपने आप ऐड आता रहेगा। जब अगर आपको कोई बात करनी हो तो ऐड के बाद आप बात कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप लोग कमेंट के लिए परेशान मत होइए, ये बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं वाचिंग के लिए, वो हम सुनील भाई के बोल रहे हैं। सुनील भाई कल हमको परेशान कर दिए थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम यहाँ चार्ज नहीं था, मोबाइल लगा के जाएं चार्जिंग में, किचन तक पहुँचे, जैसे सुनील भाई की आवाज़ आ जाए।
चलो कोई बात नहीं। तो हम जैसे किचन तक पहुँचे तैसे सुनील भाई का आवाज़ आ जाए, वाचिंग डाउन हो रही है भाई, सब लोग अपने अपने वाचिंग का ध्यान दीजिए, सब लोग अपने अपने वाचिंग का ध्यान दीजिए। अभी सुनील भाई एक कमेंट नहीं कर रहे हो, कहाँ हो? हम भी आपको परेशान करेंगे। बाकी सब लोग अपना अपना टेंशन फ्री रहिए। सुनील भाई आप कमेंट करिए। ये देखो, कल हमको बहुत परेशान किया सुनील भाई ने। ये तो हमारे पास नवरात्रि में इतना काम हो जाता है। किसको बोल रही हो, किसको बोल रही हो, किसको बोल रही हो? आप सुन नहीं रही हो तो नहीं बताऊंगी किसको बोल रही हूँ। राधे राधे सभी को, राधे राधे। ऐड को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐड आ रहा है, बिल्कुल ऐड को आप लोग देखिए, मस्त रहिए। मैं सुन रही हूँ। कहाँ सुन रही हो? मैंने 3 बार नाम लेकर के बताया, आप नहीं सुनी। आप 2 बार पूछी कि किसको बोल रही हो। वही तो कह रही हूँ, सुन नहीं रही हो। हमारे में भी 2, हाँ 2 की वाचिंग हमारे में आज दिख ही रही है। और जो कि ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मतलब कमेंट नहीं आ रहा, सबका कमेंट भी आ रहा है। जो लोग ऑन है सब पर हमको पूरा भरोसा है कि ऑन है तो मतलब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाचिंग वो कभी कभी क्या होता है ना, ये नेटवर्क से बहुत डाउन हो जाती है। और कभी कभी जितने लोग रहते हैं सबकी वाचिंग दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। क्या किया जाए, ये सब इंटरनेट का कमाल जो है ना, बहुत अजीबो गरीब है। अब क्या करे इंसान, अब फ़ोन लेकर के बैठ जाए क्या? हमारे फ़ोन के चक्कर में, हमारे लाइव के चक्कर में लेके ऐसे बैठ जाए, घर वाले निकाल के फ़ोन लेके बाहर कर देंगे। कहेंगे फ़ोन पकड़ो, निकलो। कहेंगे इनको पकड़ाओ, इनका फ़ोन हाथ में दे दो चार्जर, चलो निकलो। हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी ये मनमानी। फ़ोन फ़ोन फ़ोन, खाना पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ फ़ोन लेकर बैठी रहोगी, चलो निकलो, हो गया। मैं क्या करूं बताओ? तुम हमारे घर चली आओ मोबाइल लेकर के। और अपने बहू को भी ले आओ। बहू रानी को लेके आओ, घुमा जाओ, बस यही करो और कुछ ना करो तुम। राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐड को सभी लोग फुल वॉच करते रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइव में आप लोग हमारे इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। बिमला बहन की लाइव में आज हमने एक ही आईडी लगाई थी, कल हमने 2 आईडी लगाई थी। आपने फिर हमको एक ही आईडी सपोर्ट किया, तो इसलिए हमने फिर एक ही लगाई थी। हमने कहा बिमला बहन, हमको लगता है तो पहली बात आप बोली नहीं, आपके लाइव में गए थे तो हम पूरा सपोर्ट करके दोनों आईडीज चले आए थे, आप हमसे बोली ही नहीं। मतलब हमको लगा आप पता नहीं देख भी रही हैं कि नहीं देख रही हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा अब आए हैं तो हम सपोर्ट करके ही जाएंगे। कभी कभी इंसान के पास काम इतना होता है, नहीं बैठ पाता मोबाइल के पास, तो हमने कहा हो सकता है कहीं बिजी हूँ। ऐड चल रहा है, अरे दीदी मैं आज से अच्छा, तभी आप नहीं बोल रही थी। वही हम सोच रहे हैं कि हम जो है इतनी देर से हैं लाइव में और एक बार भी आपने नहीं बोल, नहीं तो ऐसा नहीं होता है।
नहीं आप ज़्यादा बोलते हो, लेकिन यह है कि फिर भी आप जो आता है उसके से बात करते हो, ये मैंने देखा है। फिर भी मैंने कहा हो सकता है कहीं कोई मजबूरी ज़रूर होगी, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सपोर्टिंग कमेंट करके सारे फिर चली आई थी। बाकी अभी तक हम थोड़ा सा इसमें बिजी हो गए थे ना, जो मोनोटाइज होने के चक्कर में फिर उसका सारा फंक्शन चेंज हुआ, उसको सही किए। अब हम फ्री हो गए हैं, तो अब हम सबकी लाइव बराबर अटेंड करेंगे और सबके लाइव में हम बराबर जाएंगे भी, और सब लोग हमारे लाइव में बराबर आइए भी, क्योंकि अब हम सबका बराबर सपोर्ट कर पाएंगे। अभी तक थोड़ा सा हमारा दिमाग उलझ गया था इस फ़ोन के चक्कर में, इसकी सेटिंग हो नहीं हो पा रही थी। मैं ट्रेन में थी दीदी। हाँ बहन, कोई बात नहीं मेरी बहना, होता है, सब लोग कभी न कभी कोई न कोई इसमें फंस जाते हैं, परेशान मत होइए। हाँ इसीलिए आपने म्यूट कर रखा था। ओके सही है, फिर भी बढ़िया है, नहीं तो कॉपीराइट बहुत आता है। अरे पता है, जब हमने चैनल मोनो के लिए भेजा था उसके पहले हमारे में एक भी कॉपीराइट नहीं दिख रहा था। मैंने पूरा कॉपीराइट चेक करवाया, उसके बाद कहीं भी कॉपीराइट नहीं दिखा। और जब चैनल मोनो के लिए गया तो वहाँ से 5 कॉपीराइट आया। जैसे जैसे चेक हो रहा था वैसे वैसे यहाँ वीडियो पर कॉपीराइट आ रहा था। हम तो सोचे गया काम से ले डूबेगा हमको ये कॉपीराइट। लेकिन अच्छाई उसमें क्या थी कि 2 कॉपीराइट 90 दिन के अंदर में नहीं आए थे एक साथ। इस वजह से फिर वो स्ट्राइक में नहीं चेंज हुआ, तो फिर बच गया, नहीं तो चला जाता। सारे जो है हमारे 90 दिन के आगे पीछे ही आए थे। तो मैंने जब सारे चेक किए तो मैंने कहा स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, सही है। फिर कैसे न कैसे करके वो हो के आ गया, हम तो सोचे गया। थैंक यू मेरी बहना। कॉपीराइट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कॉपीराइट से सिर्फ वीडियो डाउन हो जाती है। बाकी स्ट्राइक अगर आ जाता है, कई कॉपीराइट है नहीं पता चलता है। बिल्कुल डर तो इस बात का था कि पता लगा अगर स्ट्राइक में चला गया तो फिर सारा वॉच टाइम ख़त्म, सारा दिमाग मारी ख़त्म। 4-5 दिन तो इसके टेंशन में थे, मन ही ना करे किसी लाइव में जाए। लाइव दिखे, मोबाइल सामने रखे रहे, लाइव दिखे, सबकी देख रहे थे, लेकिन अंदर से इच्छा न करे, सोचे वो इतना मेहनत किए हैं, पता नहीं हमारा चैनल सक्सेस हो कि ना हो, नहीं जाएंगे किसी लाइव में। और जब अंदर से दिल नहीं करता, खुश नहीं रहता, तो नहीं मन करता। फिर उसके बाद में करते करते जब हो कि आ गया तो इसमें उलझ गए, कहीं वीडियो में, कहीं वहाँ, सबकी तो सेटिंग चेंज हो जाती है। अब जा कर के इससे टेंशन फ्री हुए हैं। अब आप लोगों का सपोर्ट हम बराबर कर भी पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। एक की वॉचिंग चल रही है, अब हम बताओ किसको कहें। हमारा खुद का 2 लगा है, हमारा ही दोनों नहीं दिख रहा है। जब हमारा ही दोनों नहीं दिख रहा है तो अब किसी और से क्या कहें। राधे राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, सब नेटवर्क का काम है, नेटवर्क करता रहता है अपना काम। सभी को राधे 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 राधे। 4:30 आज हमारी उषा बहन नहीं आई, हमको लगता है कहीं बिजी हो गई हैं। नहीं तो वो तो हमारे लाइव का इंतज़ार करती रहती हैं, जैसे हम लाइव आते हैं वैसे वो तो पहला नंबर आती है। आवाज़ नहीं आई तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फंस गई।
ऐड कंप्लीट। राधे राधे। कुमार जी वेलकम है लाइव में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। तुम कितने सुंदर, तुम कितनी सुंदर दिखती हो, तुम कितनी सुंदर। विमला बहन राधे 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 राधे। सभी बहनों को हमारी तरफ से राधे राधे। प्रीति बहन राधे राधे। रामसवारी बहन राधे राधे। सुनील भाई राधे राधे। दीवों के देव महादेव जी आए। राधे 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 राधे। राम संवारी बहन इतना ज़्यादा कमेंट की ज़रूरत नहीं है, काहे अपना कमेंट वेस्ट कर रही हो। किसी और के लाइव में बिना ब्लू के कमेंट शो नहीं करेगा मेरी बहन, आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं। कमेंट की भी गिनती होती है, ये चीज़ समझो पहले बात को। जितना हम लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब हमको गिनती का कमेंट देता है, उसके बाद ये ब्लू के सहारे हम लोग कमेंट को समझ लो ज़बरदस्ती लेकर के किसी और के लाइव में ले जाते हैं। बाकी जितना कमेंट हमें यूट्यूब देता है उतना कमेंट हमारा बिना ब्लू के शो होता है, ये चीज़ समझो। ऐड चल रहा है दीदी, ऐड चलाओ और ऐड ख़त्म हो तो बताओ, बस उसके बाद में अपना कमेंट बचाओ। इतना फालतू का कमेंट मत करो कि मतलब आपका बिना ब्लू के किसी के लाइव में कमेंट ना शो हो। लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं एक एक मिनट पर कमेंट करो, एक एक मिनट पर कमेंट करो ना, हम तो उनके लाइव में जाना नहीं पसंद करते भाई, बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि जब हम इतना कमेंट करेंगे तो हमारा कमेंट किसी के लाइव में शो नहीं करेगा। हम किसी नई लाइव में जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते हैं। नई लाइव में अगर हम तभी जा सकते हैं जब हमारे कमेंट वैल्यू जितनी मिली है हमको कमेंट, उसके अंदर हमने कमेंट किए हैं, तो हम नई लाइव में जाएंगे तो बिना ब्लू के हमारा कमेंट शो करेगा। इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखा करो। ऐड आ रहा है। थैंक यू सरोज सिस्टर, धन्यवाद। हम आप लोगों के अच्छे के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आप लोग इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा कमेंट किसी के भी लाइव में मत करिए। जिसको प्रॉब्लम होती है उससे बता दीजिए कि भाई इतना कमेंट नहीं कर पाएंगे, कमेंट की भी हमारे एक सीमा है। राधे 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 राधे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसे आप लोग करना चाहो। जय गुरुदेव। आ गई हमारी उषा बहन, वेलकम है उषा बहन। अभी आपको याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है आपकी तो, लेकिन अभी आप हमको सुन नहीं रही हैं क्योंकि ऐड आ रहा होगा। ऐड खत्म हो गया दीदी। हाँ, ऐड खत्म हो गया। ऐड को आपने फुल वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यही बता रहे हैं, आप सपोर्टिंग कमेंट हमारे में कम से कम 100 कमेंट कर चुकी हैं जब से आई हैं। तो इसलिए हम यही आपको समझाएंगे कि आप फालतू का कमेंट मत किया करो, थोड़ा रुक रुक के कमेंट किया करो। जो विश्वास नहीं करते हैं वो कभी नहीं करेंगे, और जिसको विश्वास करना होगा वो हमें इतने दिन से समझ रहा है। और सब के पास आजकल 2-3 आईडी सबके पास है। हमारी आईडी कहीं भी चेक कर लो, अगर हमारी आईडी आपको दिखे तो हमसे बात करो। बाकी कमेंट के लिए हमसे बात मत करो कि हम कितना कमेंट कर रहे हैं। कमेंट हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारे
कमेंट बहुत ज़्यादा करने की वजह से ही जो ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है ना। हम किसी भी लाइव में जाते हैं, हम गए, क्या लिख के आता है नीचे जब हमारा कमेंट नहीं शो करता है तो यही प्रॉब्लम है। अब हम उसको जब कमेंट करेंगे कि बहन हमें ब्लू दो, हम आपके लाइव में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो हमें ब्लू देगा तो हम ब्लू के सहारे जाते हैं, रिश्वत लेकर के तो हम उसके जाते हैं लाइव में। अपने आप घुस पाते हैं? अपने आप नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कमेंट जितना हमको यूट्यूब देता है हम उससे कहीं ज़्यादा कमेंट करते हैं ब्लू ले लेकर। ज़बरदस्ती ढकेले रहते हैं, एक के लाइव में 2-2, 250-250 कमेंट कर रहे हैं, कितना देगा हमें। जय माता दी। लाइक डन दीदी, थैंक यू उषा बहन, थैंक यू थैंक यू। आप आ गई, आपको हम बहुत देर से याद कर रहे थे। हम कहे आज हमारी उषा बहन कहाँ बिजी हो गई भाई, कहीं ना कहीं फंस जरूर गई, नहीं अभी तक वो आ गई होती, क्योंकि उषा बहन हमारे लाइव का वेट करती हैं कि कब आएगी। लाइव 3 बजे से इंतज़ार करती है, और आज आज हमारी उषा बहन 4:30 बज गया नहीं आई, मतलब कहीं ना कहीं फंस गई हैं आज। मैंने मेरे में बिना रिश्वत के कमेंट हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, सपोर्ट से परेशान है। हाय, अरे मेरी बहना ऐसे रोगी, हमें भी रुलाओगी क्या? ऐसे मत रो। अब उस दिन हमने आपको बताया था लेकिन आप नहीं मानी, तो क्या करें? ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़े, मैंने नहीं दिया। मेरे में बिना रिश्वत के कमेंट शो किया था। किया था। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ रहे हैं, जितना आता है उतना तो पढ़ेंगे। अब पढ़ाई करने जाएं क्या? बूढ़ सुग्गा तो पढ़ता नहीं है, तोता। हमारी भाषा भी सबको समझ नहीं आएगी। बूढ़ तोते को पढ़ाओगे, कितना पढ़ेगा? लोग आकर करते हैं कि आप आई क्यों नहीं, मेरे 1 घंटा तो। हाँ, तो यही तो मैं कहती हूँ, उतने लोगों के लाइव में जाओ जितने का सपोर्ट कर पाओ। अपने आप को इतना मत उलझाओ, इतना मत उलझाओ कि सिर्फ लाइव और मोबाइल हाथ में रहे, बाकी हम बाहर मिले। हमसे घर वाले दुखी हो जाएंगे फिर। आपको उस दिन क्या बताया था? यही तो बताया था, कहेंगे इनको इनकी मोबाइल दे दो, इनका चार्जर दे दो और इनको करो घर से बाहर। लोग आकर के तभी करते हैं जब आप दूसरे दिन रिटर्न करने जाओगे। जिसके लाइव में नहीं जाना है उसका रिटर्न करने मत जाओ, वो खुद ही एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन कोई नहीं आएगा, इतना अच्छा कोई नहीं है। ऐड कंप्लीट। राधे 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 कुमार जी। या तो फिर बता दो कि भाई हम इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, हम इंसान हैं, जितना कर पाते हैं आप लोग उतना उतना कीजिए, तब तो हम आ पाएंगे। और जो सब लोग हमको इतना इतना कर जाओगे तो कहाँ हो पाएगा। लेकिन हमें ना बताना। बाय 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 प्रीति बहन, हमें बिल्कुल ना बताना। जय माता दी, जय माता दी। और एक चीज़ आपको अच्छे से पता है उषा बहन, अगर आप
एक दिन किसी के लाइव में नहीं जाओगी तो वो बंदा आपके लाइव में दूसरे दिन नहीं आएगा। मैंने ये चीज़ अपने उसमें देखा है। मैं जब थोड़ा सा परेशान हो गई थी, मैं सबके लाइव में नहीं जा पा रही थी ना, एक दिन भी किसी ने हमको 1 घंटे एक्स्ट्रा नहीं दिया है। रिकॉर्ड है इस चीज़ का। और पता है, मैंने अपना लाइव बंद कर दिया था, तब भी मुझे जिसकी लाइव दिखती थी मैं उसके लाइव में जाके सपोर्ट कर देती थी, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना समय होता था हम दे के आते थे। लेकिन जब मैंने जो है अपना लाइव का, जब हम 2 4 6 दिन किसी के लाइव में नहीं जा पाए तो मेरे लाइव में किसी ने भी एक सेकंड भी किसी ने एक्स्ट्रा नहीं दिया है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ था। और इसी बात को लेकर के अब हम उतना ही करते हैं जितना हमें लोग करते हैं ऐड। थैंक यू प्रीति बहन। ये बात हमको थोड़ा सा तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी इस बात की ना, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं देखा कि मतलब अगला हमारे लाइफ में नहीं आया तो ना जाए। अगला नहीं आया, कोई नहीं, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, ना आया पाया हो, लेकिन हम फ्री हैं तो हम अपनी आईडी का क्या अचार डालेंगे, चलो लगा देते हैं। लेकिन उस समय हमारा दिमाग इतना उलझ गया था, मैंने तो दिया था। हाँ आपने, अरे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लाइव में की बात कर रही हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में जब मैं परेशान हुई और मैं जब 2 4 दिन किसी की लाइव में नहीं जा पाई तो मैंने देखा किसी बंदे ने मुझे 1 मिनट का समय नहीं दिया। जब मैंने जाना शुरू किया सबके लाइव में तो लोग हमारे लाइव में आना शुरू किए। तो क्या फ़ायदा ऐसे अपना टाइम वेस्ट करने से। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो एक दिन नहीं जाओगे दूसरे दिन कोई नहीं आएगा आपके लाइव में। और इतना परेशान मत होइए। जब से मैंने लाइव चलाना शुरू किया है अभी तक ना तो मैंने लाइव बंद किया, बाय बाय सुनील भाई, और ना तो मैंने किसी की लाइव में जाना बंद किया। इधर जब से मेरा जो है ये मोनेटाइजेशन के लिए चैनल गया और वो हो के नहीं आ पा रहा, आया था उसके बाद जब इसकी सेटिंग में जितना समय उलझे थे उतने समय के लिए मैंने लाइव भी बंद किया और लाइव में जाना भी बंद किया। नहीं तो मैं अपना लाइव नहीं, मैं दोनों टाइम लाइव आती थी, लेकिन मैंने एक टाइम का लाइव इसलिए बंद कर दिया कि सुबह के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है और सबका सपोर्ट भी नहीं हो पाता है। और 2 टाइम लाइव आओ तो दोनों टाइम सबका सपोर्ट करना, और उसके बाद में फिर घर में परिवार में सबको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भाई नहीं समय से सब कुछ कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी और ख़ुद को भी प्रॉब्लम होती है। थक जाना होता है, पूरे दिन थक जाते हैं और उसके बाद फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। एक टाइम लाइव आओ, अपना आराम से सपोर्ट भी कर पाओगे, पूरा दिन सबका सपोर्ट करो, शाम को लाइव आओ, जिसका सपोर्ट बच जाए उसको शाम को कर दो, फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जियो। यूट्यूब से घर नहीं चलना है, जो होना होगा होएगा। राधे 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 सभी को, राधे राधे। सभी देवताओं को मेरा नमस्कार है, सभी देवताओं को मेरा नमस्कार है। राम जिनका नाम है अयोध्यापुरी धाम है, राम जिनका नाम है अयोध्यापुरी धाम है। ऐसे बंसी ऐसे धनुषधारी को मेरा नमस्कार।
थैंक यू। ऐड को आप लोग फुल वॉच करते हैं, बहुत अच्छा है। एक के लाइव में 10 से 12 ऐड आता है। जो लोग पूरा लाइव में रहते हैं 12 से कम ऐड नहीं आता है। राधे 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 राधे। ऐड आ रहा है बहन, राधे राधे। अभी सोचो सबसे ज़्यादा आराम में इस समय कौन है? सबसे ज़्यादा आराम में इस समय है सरोज सिस्टर। और सरोज सिस्टर क्यों आराम में है पता है? सरोज सिस्टर की बहुरिया आ गई। अब सरोज सिस्टर बिंदास अपना लाइव चलाती हैं बैठ के। सबसे ज़्यादा आराम में हम हैं, हम आराम करते हैं सबसे ज़्यादा। ओहो डीजे भाई, वेलकम है डीजे भाई। डीजे भाई का वेलकम है लाइव में। डीजे भाई आ गए भाई। डीजे भाई हमारे आते हैं तो लाइव में लाइक की बौछार हो जाती है। इतनी आईडी हमारे डीजे भाई के पास है, ये लाइक 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 की कमी फिर नहीं हो सकती। बाय 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 बाय। ऐड खत्म हो गया दीदी, थैंक यू। राधे राधे डीजे भाई, राधे राधे। सरोज बहन बाय 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 बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सरोज बहन बढ़िया आराम से बनी बनाई रोटी भी मिल रही है और टेंशन फ्री। खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया? अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है आपका। अभी टेंशन फ्री हो ना, कोई टेंशन नहीं है आपको। कहाँ जा रही हो? रोटी बनाने की टेंशन तो खत्म हो गई है आपकी। हाँ तो यहाँ पागल लड़की की लाइफ में क्या कर रही? कौन सी पागल लड़की? हाँ तो यह पागल लड़की लाइव में क्या कर रही है बताएंगे? ओ किसको पूछ रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं किसका नाम ले लूँ भाई? अभी अभी बहू ऑफिस में है। अच्छा जॉब करती है क्या? तो और बढ़िया है, पैसे वाली बहू लाई। ये तो और बढ़िया है। नाश्ता की तैयारी करी। ओह चलो भैया, ये तो और बढ़िया काम है। सुंदर सुंदर बढ़िया, नो टेंशन। हे राम संवारी की बात कर रहे हैं? अच्छा वही तो हम सोचे भाई हम किसका नाम ले लें। आप किसको पागल बोल रहे हैं? हमारे में बहुत सारी बहनें हैं। हाँ बहन, सब तो बढ़िया है बहना। छुट्टी नहीं है जिंदगी में। अरे ठीक है बहन, कुछ हाथ पैर चलते रहना चाहिए, क्योंकि राम सवारी है ना, यह बोलती नहीं, इसलिए उसको बोलना पड़ रहा है मेरे को इस तरीके से। अरे राम सवारी बहना, काहे डीजे भैया से अपने आप को पागल कहलवा रही हो भाई? बोल दो। राधी राधी राधी, रोटी बनाना चाहिए। देखो भाई, सही सही बोले। अगर बहुरिया जॉब करेगी तो वो बेचारी भी तो इंसान है, कितना करेगी? वो जॉब भी करेगी तो फिर घर आकर के रोटी जितना कर देगी, ये समझ लो हमारा भाग्य है, बस और कुछ नहीं कह सकते हैं। अब वो या तो फिर घर में, जैसे हम लोग घर में हैं तो अपना भाई दाना रोटी कर रहे हैं, कपड़े कर रहे हैं। अब उसको तो ये भी है कि हमें जाना है ऑफिस।
तो क्या करे बेचारी। राधे 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 डीजे भैया, राधे 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 राधे। ऐड ऐड ऐड, थैंक यू। सभी लोग ऐड को फुल वॉच करते रहिए। ये कहाँ से आ गए भाई। राधे 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 राधे। मजे लो, जितना मिल रहा है बहुत है। पहले सब करना पड़ता था ना। हाँ तो आप भी तो कमेंट नहीं करते हो हमारे वीडियो पर डीजे भैया। अगर जिसका जिसका कमेंट मिलता है, उस दिन हमने आपके उस पर कमेंट किया था, आपने रिटर्न कमेंट नहीं किया। अगर कमेंट मिले तो हम बराबर कमेंट करते रहे। जो जो कमेंट करता है उसको हम रिटर्न में कमेंट बराबर करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में कमेंट छोड़ देते तो आपका लाइव का टाक। आपके वीडियो पर कमेंट है, ऐसा कैसे बोल रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता है। अभी उस दिन भी आप हमसे शिकायत कर रहे थे। मैंने दोनों आईडी से आपको कमेंट किए थे और बहुत सारी वीडियो पर किए थे मैंने। वो भागने वाली तो नहीं है। राम सवारी ऐसी है नहीं जो कि भाग जाए और कोई उन्हें भगा दे। ये नामुमकिन है तो कहीं बिजी होंगी। राधे राधे विजय जी, राधे राधे। ऐड हमारे लाइव में भागने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं भागेगा, सब डटे रहने वाले हैं। राधे 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 भैया जी, राधे राधे डीजे भाई। अच्छा डीजे भाई, हमारी आवाज आपको सुनाई तो दे रही है ना। क्योंकि आपकी शिकायत थी कि आप लोग इतना धीरे बोलते हो कि हमें आवाज ही आप लोगों की नहीं सुनाई देती। इसलिए हमने कहा अभी पूछ लेते हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ना आ रही हो तो और तेज बोलने की कोशिश करेंगे। राधे 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 राधे। अरे ऐसा बोलो ना कि वह हार मान गई है इसलिए वह सामने नहीं आ पा रही है, ठीक है। ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। कभी ये हो नहीं सकता कि हम ऐसा बोल दें। और अपनी बहनों के बारे में तो हम कभी ना बोलें, कभी भी नहीं बोलेंगे। और हम बुलाएंगे भी नहीं राम सवारी बहन को, क्योंकि वो हमें कभी भी बुलाती नहीं है। हम चाहे जितनी देर कमेंट ना करें, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में बिजी होंगी। नहीं तो उनका कमेंट आ गया होता अभी तक, जब से आप बोल रहे हो। ये देखो ऐड चल रहा है दीदी, देखा। शेरनी है शेरनी। जो हमें नहीं बुलाता है और हम पे भरोसा करता है, उस पर हम पूरा भरोसा करते हैं। और हम कभी भी उसको नहीं बुलाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं बुलाते हैं कि कहाँ हो आपने कमेंट नहीं किया। नहीं, हम तो वह बहरे तो नहीं है, लेकिन आज आप लाइव में कह रहे थे। हाँ देखा ना।
नहीं, यही इनकी आईडी चल रही है बहुत देर से। आज आप कह रहे थे ना, आप लोग इतना धीरे बोलते हो कि मुझे कानों तक आवाज़ नहीं जाती, तो मुझे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि आपको, हमें लगता है कि मतलब आप हमारी बात को सुन नहीं पाते हो। ऐड कंप्लीट। सीताराम सीताराम सीताराम। सभी आईडी से आप लाइक कर दिया करो एक बार सूरज जी, उसके बाद में आप एक आईडी को ऑन करके छोड़ दिया करो, उसी से आने दिया करो ऐड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 200 250 जो भी दिखाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऐड को आने दीजिए। आप भी परेशान मत होइए, एक बार सब आईडी को ओपन करके सबसे लाइक कर दीजिए, उसके बाद एक को छोड़ दीजिए, उसमें ऐड अपने आप आता रहेगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। राधे 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 राधे। हम्म। हम भी हैं, बस बैठे हैं, हमने कहा देखें आप लोगों बात कर लें थोड़ा देर। देवों के देव महादेव जी आए आकर के। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। थक गए बैठे बैठे, हम बैठे बैठे थक जाते हैं अपने राम संवारी बहन की तरह। हाँ तो अभी भी तुम बहुत इससे ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं बोल पाएंगे मेरे भाई, मेरा 9 दिन का व्रत चल रहा है, मेरा गला सूख जाएगा, हम निकल जाएंगे। लाइव यहीं चलता रह जाएगा, आप लोग कमेंट करते रह जाओगे, हम पहुंच जाएंगे, लोग आ जाएंगे राम नाम सत्य बोलने। क्योंकि इससे ज़्यादा तेज बोलेंगे ना तो हो गई जय राम जी की। कल कीर्तन में गए थे, 2-3 गाने गा लिए थे और गला ऐसे दर्द होता रहा था रात में कि पानी नहीं निकला जा रहा था मुझसे, और सर भी दर्द होता है मेरा बहुत बोलने से। व्रत में हमें यही प्रॉब्लम होती है, बाकी हमें व्रत नहीं खलता है, हमको कुछ ना दो पूरा दिन चलेगा, ज़्यादा दिन भर खाते नहीं हैं, लेकिन बस ये है कि गला सूखता है मेरा, मुझे इससे दिक्कत होती है। हाँ भाई बिल्कुल, सभी लोग ऐड को फुल वॉच करते रहिए। हाँ तो हमने भी आपका ऐड का कर दिया है, कृपया उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ऐड को स्किप मत करिए, ऐड को फुल वॉच करते रहिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग भी करते हो और हम भी आप इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम उस मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए, नहीं तो मेहनत करने क्या फ़ायदा। फल ज़्यादा मीठा भले ना हो, लेकिन मिल जाए उतने बहुत है। आज तो मैंने सोचा है मुझे कीर्तन में बिल्कुल भी गाना नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके पीछे बैठना है। मेरा आज सर भी दर्द हो रहा है और गला भी दर्द हो रहा है। पीछे बैठ करके वीडियो बनानी है खाली बस। राधे 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 राधे।
सभी को राधे राधे। हंसते रहिए, हम भी हंस लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग बहुत हंस रहे हो ना। कुमार जी भी हंस रहे हैं और डीजे भैया भी हंस रहे हैं हमारे। सब लोग हंस रहे हैं। क्या बात है, हम ही क्यों पीछे रहे भाई, हम भी थोड़ा सा हंस लेते हैं। राधे राधे रटते रहिए, लगे न रुपया। अरे यार, ये कैमरा बैक कैसे हो गया। गुलाब जैसे राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। ऐड, थैंक यू मेरी बहन, ऐड को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीजे भैया भाग गए क्या? सभी देवता। ऐड चल रहा है दीदी, थैंक यू बहना, कोई दिक्कत नहीं, ऐड चलाओ। अभी तो डीजे भैया सबको डरा रहे थे, अभी आप ही डर गए। राम सवारी बहन प्रकट हुई और आप चल दिए। राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे।
इस वाली आईडी पर आपके ब्लू नहीं है, लेकिन इससे कमेंट शो कर रहा है राम समारी बहन, तो यही बहुत है। क्या थैंक यू मेरी बहना, ऐड को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ दीदी शो करता है, हाँ जिसका शो करता है। इससे ज़्यादा अभी लाइव में कमेंट कम करती होंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, बाय 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 बाय। राम सवारी बहन, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुलाब जैसे खिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। गुलाब जैसन खिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। मांग में सिंदूरा भरल बाटे, मांग में सिंदूरा भरल बाटे, कि माथे पे बिंदिया रचल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। राधे 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 सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आज हमारी वाचिंग बहुत अच्छी नहीं चली भाई, आज वाचिंग 2 3 4 3 4 3 4 चली, बस इससे ज़्यादा वाचिंग नहीं चली। कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। मंदिर में रहल बाटो, कि मंदिर में रहल बाटो, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। तवा में चूड़िया, तवा में चूड़िया, सजावल बाटो, सजावल बाटो, के हथवा में मेहंदी रचावल बाटो, के अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, के अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, मैया हमके मिलल बाटे, अम्बे मैया हमके मिलल बाटे। हथवा में मेहंदी बाटे, लगावल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल बाटे, कि अम्बे मैया हमके मिलल लगाई कैसे, हाथवा में मेहंदी लगाई कैसे, मैया सोई भार निंदिया जगाई कैसे, मैया सोई भार निंदिया जगाई कैसे। मांग मैया के सुंदर शोभे, मांग मैया के सुंदर शोभे, मथवा में बिंदिया
जगाई कैसे मैया जगाई कैसे मैया सोमवार निंदिया जगाई कैसे। राधे 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 आधे 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 आधे। का मतलब घड़ी में 5:30 बजने वाले हैं का। ये 5:30 भी कितनी जल्दी बज जाता है। इतनी जल्दी नहीं बजना चाहिए इसको। ऐड कंप्लीट। राधे 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 राधे। ऐड को फुल वॉच करने के लिए उषा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सबका पूरा हो गया, उषा बहन और कुमार जी बचे हैं। बाकी सब चले गए अपना अपना पूरा करके 1-1 घंटा। सुमन बहन आप भी चली गई क्या। सुमन बहन का तो 2-3-4 कमेंट के बाद आया ही नहीं। उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सुमन बहन लाइव में हो कि चली गई हो। मैंने जाने के लिए तो नहीं बोला था, मैंने तो आईडी लगाने के लिए बोला था कि लगा दो काम कर लो। मतलब सहूलियत अच्छी नहीं लगी क्या आपको। अगर ऐसी बात है तो कल से नहीं मिलेगी। हाँ आप तो हो, आप तो हो, कुमार जी भी हैं। आप लोग नहीं जाओगे हमें पता है। लेकिन सुमन बहन को पूछ रहे हैं। सुमन बहन को मैंने ये कहा था कि आप ऑन कर दो, आप काम कर लो। अब बताओ, उन्होंने बताया भी नहीं, ऐसे चली गई। लाइव में हो तो सुन रही हो तो और अच्छा है, क्योंकि हम उन्हीं को बता रहे हैं। अगर ऐसे सहूलियत देने से अगर लोग फ़ायदा उठाएंगे हमारा, तो हम सहूलियत देना बंद कर देंगे। हम तो सोचते हैं सब लोग अपना अपना काम भी कर लो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो हैं भैया लाइव में। आप तो हो, आप पर तो पूरा भरोसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट जिसका भी करो, मेरा मानना ये है ईमानदारी से करो, बिना बताए किसी की लाइव से नहीं जाना चाहिए। और अगर ना करो तो ना करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितना समय हो उतना दीजिए, आप लोग बता के जाइए बस। पहले लोग बोलेंगे नहीं, चले जाएंगे, फिर उसके बाद में कहेंगे हम तो थे, लास्ट तक थे, कमेंट नहीं कर पाए। तो अरे भाई, कमेंट नहीं कर पाए तो फिर रहने का, एक आध बार बीच में तो करना चाहिए कि हाँ ऐड आ रहा है या हम हैं लाइव में, कुछ तो पता होना चाहिए। अब एकदम से आप सन्नाटे में ऑन कर दिया तो आधा आधा घंटा कमेंट नहीं करोगे तो क्या पता हो कि नहीं हो। या तो फिर वो बंदा ऐसा हो कि जो कि बिना बताए ना जाता हो, तो उसके बारे में तो सोच सकते हैं, चलो हो सकता है कहीं बिजी हो गए हो, कमेंट ना किया हो, लास्ट में भी करके बता देगा तो हम भरोसा करते हैं।
हाँ, आप तो परेशान हो क्योंकि आपके लाइव में हम देखते हैं ना, जितने लोग आपके लाइव में आते हैं मेरे बस का तो नहीं है भाई, इतना संभालना मैं नहीं कर सकती। मैं इतने लोगों के लाइव में जाते जाते मैं खुद पागल हो जाऊंगी। ऐड कंप्लीट, कुमार जी राधे राधे। मैं उतने के ही लाइव में जाती हूँ जिसको मैं, एक सुबह की लाइव आपकी है, हम सुबह लाइव इसी वजह से नहीं स्टार्ट किए। सुबह हमारा अगर हम काम करते रहते थे किचन में तो हम चालू कर देते थे पहले, लेकिन फिर आपका सपोर्ट शाम को नहीं हो पाता है क्योंकि शाम को राम संवारी बहन आ जाती हैं लाइव, तो हम इनके लाइव में चले जाते हैं, तो हम शाम को सपोर्ट नहीं, अगर याद आ जाता है आपके लाइव देख लेते हैं तो हम आके लाइक कर देते हैं, बाकी हम कमेंट शाम को सपोर्ट नहीं कर पाते, हम झूठ क्यों बोलें। तो राम संवारी बहन का करते हैं, उससे पहले अगर भरत भैया आ गए तो उनके लाइव में थोड़ा देर के लिए चले जाते हैं। और ऐसे है कि शाम का लाइव सबका 1-1 घंटे बाद सबका लाइव है, तो इस वजह से शाम का सपोर्ट हो नहीं पाता है। सुबह के टाइम में अगर हम लाइव आ जाते हैं तो आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके चक्कर में हमने सुबह का लाइव चालू है नहीं किया। हमने कहा वैसे भी दिमाग मारी हो जाएगी, फिर उतने लोग सुबह आएंगे, उतने लोग शाम को आएंगे, उनका सपोर्ट पूरा करो, फिर उनका पूरा करो। 12 बजे रात तक हम सपोर्टें करते रहते थे और इसमें हम हो जाते हैं बीमार। तो जितनी अपनी चादर हो उतना पैर फैलाएंगे, क्या करें। ये देखो हंसते हुए आई हैं। बिल्कुल हंसी आपकी अच्छी नहीं लग रही है हमको, कब से बुला रहे हैं आपको, हम तो सोचे आप चली गई हो। कितना बोला भी आपको, कितना डाटा पता है, बताइए। बिना बताए चली गई, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको बता के जाना चाहिए था। 2-4 कमेंट करी और चली गई, बताओ ये कोई बात होती है क्या। इतना सारा बोला था, फिर पीछे बोलने की आदत नहीं है, जो बोला था वो अभी भी बोल दे रहे। पीठ पीछे बोला तो क्या बोला। कौन अभी तक लाइक चुरा के बैठा था भाई, कौन चुरा के बैठा था मेरा 1 लाइक, अभी आया है 1 लाइक। अरे तो मेरी बहना, मैंने कहा था ऑन करके छोड़ दो, ऑन करके छोड़ दिया करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दिया करो हमारा। बहन बच्चों को हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हैं? बच्चों को कोचिंग हम पढ़ाते हैं, 3 से कुछ देर तक तो हम रख दिए थे आवाज़। 3 बजे हम लाइव में नहीं आए थे, किसके लाइव में जोड़ के रख दिया था। हम तो आज आए थे 3:35 का, तो हमने अपना शेड्यूल लगाया था, 3:35 पे आए थे लाइव। राधा रानी राधा रानी राधा रानी आम। लाइक डन। कान्हा बहन वेलकम है लाइव में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा 1 लाइक बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम किए थे बहन, कर सकते थे आधा घंटा तक। थैंक यू, आपने ऑन करके रखा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बहन, उसके पहले से हमारा कोचिंग चालू हो गया था, इसलिए तो हम कमेंट नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, कमेंट का तो कोई इशू ही नहीं है, कमेंट आप लोग बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन ऐड के समय सिर्फ ऐड लिख दीजिए बस, कि आप लाइव में हो, इसकी जानकारी होना चाहिए। आप हमारी बात भी मत सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं,
आप म्यूट कर दो, लाइव को ऑन कर दो, उसके बाद में ऐड आवे तो सिर्फ ऐड लिख दो बस। हमारी कि जैसा तो आप लोगों को फ्री कोई छोड़ेगा नहीं, हमने एकदम से फ्री छोड़ा है, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहो। लेकिन ऐड के समय ऐड लिख दो तो ये पता होता है ना कि आप लाइव में हो। बाकी आप पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। ऐड कंप्लीट। राधे राधे। कुमार जी को देखो, एक भी ऐड मिस नहीं किया इन्होंने अभी तक। दीदी मैं क्या करूं, आप हमारे घर चले आओ और यहाँ पर आओ, बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, आप खाओ आराम से, यहाँ बैठो, दोनों लोग एक साथ लाइव चलाया जाएगा। राधे 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 राधे। उषा बहन, एक नहीं दो बढ़ाएंगे। हाँ तो तेरी चल रहे हैं, आज फिर से ब्लू हटाएंगे। कभी ना बोलो कि हम लाइव चलाएंगे, तो हम तो पहले से ही, हमको समझ लो हम कटे फिर। हमारी तरफ से बाय बाय उषा बहन। हमने कहा पहले ही बोल दें क्योंकि लाइव में तो हमारा कमेंट शो नहीं करेगा, तो हमने कहा पहले ही बोल दे रहे हैं। उषा बहन बाय बाय। तो फिर आपसे हमारी मुलाकात हमारे ही लाइव में होगी। कल फिर मिलते हैं हमारी लाइव में। आप इग्नोर करना सीख लो, सबसे बड़ी दवाई यही है। जहाँ तक पहुँच पाओ वहाँ तक पहुँचो, जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो तो क्या हवा हो जाओगे, क्या उड़ के जाओगे। अच्छे सपोर्टर दो चार हों बहुत हैं। अरे ब्लू हटाना पड़ता है कान्हा बहन, ब्लू नहीं हटाएंगी तो फिर इनका कमेंट कहीं नहीं शो करेगा ना, तो ब्लू हटाना ज़रूरी हो जाता है। ब्लू कुछ कुछ दिनों पर हटा लेना चाहिए, इससे अपना भी कमेंट बराबर शो करता है और इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे चैनल पर भी। अगर हम एक बार ब्लू दे करके ब्लू कभी नहीं हटाते हैं तो उससे चैनल भी हमारा डाउन होने लगता है। क्योंकि उनको पता है ना कि आप जाओगी और उनको रिटर्न करके आओगी ज़रूर, तो सोचते हैं कि हम दे के जाएं, आए हैं तो पूरा 1 घंटा दे के जाएं। हम तो एकदम बहरे हो जाते हैं, हम तो दोनों आईडी से 1-1 घंटा दे आते हैं। हमने सोचा आप हमको नहीं कहोगी ना, हमारी लाइव में हो, तो इसलिए हमने कहा हम खुद को कह देते हैं कोई अच्छा सा। यही बात तो मैंने उस दिन आपके लाइव में कही थी, यही शब्द बोले थे, ये कई लोगों को बुरा भी लग गया था। दीदी कभी ब्लू हटा कर देखिए, जब मैं ब्लू हटाती हूँ तो वो दीदी कभी ब्लू हटा कर देखिए, जब मैं ब्लू हटाती हूँ तो लोग ज़्यादा जोड़ने लगते हैं, जब ब्लू बंद हो जाता है तो लोग नहीं जुड़ते हैं। हाँ ब्लू हटाया जाता है, बीच बीच में हटा लेना चाहिए ब्लू, हमको भी हटाना है।
अभी हम भी हटाएंगे किसी दिन ब्लू। ऐड को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा बहन। अभी सोच रहे हैं कि इधर नवरात्रि के बाद हटाएंगे। कमेंट समझ लो सही बात है भाई। देखो इतना टेंशन वाली लाइफ तो हमें नहीं समझ में आती। बहुत सीधी सी बात है। हम एक दिन जाते हैं, जो लोग हमें टेंशन देते हैं हम उनके लाइफ में दोबारा नहीं जाते हैं। बहुत खुली बात है हमारी। आपके लाइफ में आए हैं, हमको पता है कि हमारी आईडी अगर आपको किसी और के लाइफ में मिल जाए, अगर हम लाइव आपके लाइव में आईडी जो लगाए हैं, हमारे पास 2-3 आईडी है, वो आईडी अगर किसी की लाइव में मिल जाए तो आप हमसे शिकायत करो, वरना हमसे शिकायत मत करो। हम आपके लाइव में ऑन हैं तो ऑन हैं। अगर कमेंट का समय है तो कमेंट भी पूरा करेंगे। नहीं कमेंट का समय, से कभी कभी क्या होता है कि कोई आ गया या कोई काम ऐसा फंस गया कि नहीं हाथ फ्री होता है, तो ऑन है, ऑन रहेगा। जब तक हम बताएंगे नहीं कि हम जा रहे हैं तब तक ऑन रहेगा। तो वही उम्मीद हम सबसे करते हैं कि आप लोग ऑन रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग ऑन कर दीजिए, हमें समय दीजिए, ऑन करके दीजिए। बस ऐड को स्किप करके हमें कमेंट मत करिए। ऐड को स्किप करके कमेंट करने का क्या फ़ायदा। ऐड आ रहा है, आपकी बात नहीं सुन पाऊंगी। पहले ना सुनो तुम। कमेंट करने से कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं है। आप कमेंट करे जा रहे हो। यही चीज़ मैंने उस दिन आपके लाइव में बोला था कि आप लोग कमेंट कम करिए, लेकिन ईमानदारी से सपोर्ट तो करिए। उसमें 1-2 लोगों को बुरा भी लग गया था। जीरो 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 की वाचिंग। वाह 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 वाह। आज हमें वाचिंग इतनी अच्छी मिली है कि हम क्या भी बताएं। उसकी तारीफ़ करेंगे तो उसको शर्म आ जाएगी, इसीलिए हम उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 3 4 से ऊपर वाचिंग नहीं गई। राधे 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 राधे। कुमार जी राधे राधे। अभी इस समय हमारे लाइव में 1 2 3 4 5 6 आईडी लगी है। एक की वाचिंग हमें मिल रही है, बताओ किसकी है। राधे राधे राधे। हीरा रानी राधे। और कोई भी लाइव से बिना बताए मत जाया करो आप लोग। अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोग एक बार ये बोलो कि ठीक है अब हम चलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। बुरा लगे लगे, जो सही है वो सही है। भाई एक चीज़ बताओ, अगर मान लो आप, हमको ये नहीं समझ में आता है, हम लोगों को वॉच टाइम तो चाहिए नहीं जिससे कि आप लोग कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, 1-1 सेकंड में 2-2 कमेंट कर। ये कौन समझाए इनको कि कमेंट की गिनती होती है। यूट्यूब की तरफ से हमें उतना कमेंट मिलता है जितना अगर हम यूज कर लेते हैं तो उसके बाद बिना ब्लू के कमेंट नहीं शो करता है। हम कई बार इसको बता चुके हैं कि आप लोग उतने ही कमेंट करिए जितना हमें यूट्यूब की तरफ से मिलता है। उसमें से आप कमेंट बचा के चलिए जिससे कि हमारा बिना ब्लू के किसी और के लाइव में कमेंट शो करे। लेकिन लोगों को समझ में आती, लोग सोचते हैं कि बस कमेंट का भंडार लगा है। मांगते भी ऐसा है, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। अरे एक मिनट में अगर हम 4 कमेंट कर रहे हैं तो कितना दे रहा है हमें। नहीं दिखती बहना, अभी हमारे में 1 की वाचिंग दिख रही है। 1 की वाचिंग है, 1 की। अब भगवान जाने किसकी है। अब 0 की हो गई। सिस्टर हम तो आप दोनों की लाइव में ज़रूर आते हैं। हम तो किसी
जानते भी नहीं थे। सुबह में हमें कम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम तो फिर रह जाते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं, आप तो आते हो। और आपके लाइव में आज हम नहीं आ पाए हैं क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट से अपना मोबाइल उठाया था। हम पाठ करने चले गए, वहाँ से लौटे तो हमको काफ़ी उधर लेट हो गया। उसके बाद फिर हमने फलाहार बनाना शुरू कर दिया, दिमाग में नहीं आई। फिर जब मैंने ओपन किया तो मुझे लगा आपकी लाइव बंद हो गई थी, क्योंकि वही 2 बजे के लगभग था जब मैंने मोबाइल उठाया तो आपकी लाइव बंद हो गई थी शायद, या चली नहीं थी, भगवान जाने क्या था, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा मैं आज लाइव में नहीं जा पाई आपके, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब कहते हैं आप लोग कमेंट कम करिए, कमेंट ऐड आए तो बताइए कि ऐड आ गया, ठीक। आप कमेंट बंद कर दीजिए, ऐड ख़त्म होता है तो बता दीजिए कि ऐड ख़त्म हो गया। उसके बाद में आप लोग अपना काम करते रहिए, नहीं भी बताइए कि ऐड ख़त्म हो गया, ऐड आ गया, बस वो तो ख़त्म हो ही जाएगा। अच्छा, तभी हमको लाइव नहीं मिली थी, वही हम सोचे आप 2 बजे तक तो चलती रहती है, आज नहीं मिल रही है ऐड। थैंक यू ऐड को फॉलो आज करने के लिए। और उषा बहन आपके लाइव में देखते हैं ऐसी कमेंट की बौछार होती है भाई, जैसे लगता है हमें वॉच टाइम चाहिए, वॉच टाइम में हमारा कमेंट जुड़ेगा। अरे धड़ाधड़ चलता रहता है भाई, 1 सेकंड के लिए भी किसी का कमेंट नहीं बंद होता है। पता नहीं वो ऐड कब देखते हैं लोग, मैं तो इसी में कंफ्यूज रहती हूँ। मैं तो इतना कमेंट भाई मतलब भर का करते हैं बस। और यही रीज़न है जो हम लोगों का कमेंट किसी की लाइव में नहीं शो करता, यही रीज़न है। जो लोग लिमिटेड कमेंट करते हैं उनका कमेंट शो करता है बिना ब्लू के। हमसे तो जो अनलिमिटेड कमेंट मांगता है, कमेंट करो संजू बहन कमेंट करो, तो हम सुनते रहते हैं, आवाज़ बंद कर देते हैं गुस्से के मारे। लाइव चलेगा, लाइव नहीं बंद करेंगे आपका, लेकिन आवाज़ बंद कर देंगे, सुनेंगे नहीं, चिल्लाओ कितना चिल्लाओगे। अरे मेरी भी बात को समझो, ऐसा थोड़ी ना होता है ऐड। थैंक यू। कान्हा बहन ऐड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेरी बहन ऐड को फुल वॉच करने के लिए। ऐड कंप्लीट संजू जी, राधे राधे। राधे 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 कुमार जी, राधे राधे। सिस्टर जब हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाओ पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को दे दो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। कल से जल्दी आ जाया करो, 3 बजे 3:30 बजे तक लाइव चालू कर देते हैं, तो उतने समय आ जाया करो तो आपका 4:30 5 बजे तक हो जाया करेगा। कान्हा बहन बाय 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 बाय। थोड़ा जल्दी आया करो, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करो मेरी बहन। सिद्धियों के देव महादेव जी आए, देवा देव महादेव जी आए। नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी लाइव है क्या? गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करो, जिससे थोड़ा देर सपोर्ट हो जाया करेगा। बाकी गुस्सा नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ, उनका भविष्य है ये। बाय बाय कुमार जी, बाय बाय, गुस्से की कोई बात नहीं है। आज कल से हम आपको बता दें, कीर्तन कीर्तन ओ ओ आपको बता दें 3 3:30 बजे के लगभग हम लाइव चालू कर देते हैं। हो सकता है 3 बजे, नहीं तो 3:30 तक तो हर हालत में शुरू कर देते हैं। तो आप आ सकते हो आराम से, टेंशन फ्री हो करके आप सपोर्ट कर सकते हो।
और अभी उषा बहन आप हो, दीदी जा रहे हैं, जो काम करने वाले हैं उसको अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑन करके छोड़ दो, जाओ। और कुमार जी हैं, उषा बहन है। कुमार जी की जिम्मेदारी है कि मेरे लाइव को आप संभाल के रखिएगा जब तक हम आते नहीं हैं। सब लोग हमारे लाइव को देखे रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं कीर्तन में, अभी आते हैं गला फाड़ फाड़ के आते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज लाइव को बंद करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमारे लाइव का समय भी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आज लाइव चलती रहेगी और हम कीर्तन में जाएंगे। आवाज़ चालू करके जाएंगे, जितना आप लोगों को सुनाई देगा सुन लेना। कि बंद कर दें क्या? देवों के देव महादेव। अभी से वाचिंग डाउन होना शुरू हो गई, अभी तो हम गए भी नहीं है, अभी तो हम यहीं पर हैं, जिन जीता जागता। चलो अब आप लोग डाउन करो, चाहे संभालो, हम जा रहे हैं। मैया जी तेरे
राधे 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 कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर हमारे लाइव में बने रहने के लिए और लाइव को संभाल के रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बता के गए थे कि आप जाइएगा नहीं, और आप गए नहीं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आप बने हुए हैं। शर्माते हैं जैसे प्रसाद लेने में भी।